क्या चल रहा है। तो बाकी एक कुछ सवाल लेंगे मनीषा जी के। हाँ, या प्लीज। Now, this was not a story written by you, but you have weaved it very beautifully. This story was available for 32 years. Nobody took the initiative of making the movie. So, but when it was made, even a day before, you didn't know if it would be released. But when it got released, it's so well received. So, what do you think, Mr. Vivek, was India not ready for an alternative narrative, and this new India is ready the way it has received? देखिए क्या है कि ये सारा जो आपका सवाल बहुत गहरा है, पर इसको बहुत घंटे लगेंगे समझाने पर। मैं आपको बहुत ब्रीफ बताता हूँ। सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो आता है 13 साल से लेकर 21 साल की उम्र में बच्चों की ज़िंदगी में। उसमें आप जैसा उनको सिखा दें वो क्ले की तरह वैसे उनका दिमाग बन जाता है। इम्प्रेशनेबल एज। हाँ, अब मेरा बेटा है, उसको वो 13 साल का था, 14 साल का, और कहने लगा कि कोई गॉड और नहीं होता है, जो रिलीजन मानते हैं वो सब बेवकूफ़ लोग हैं। राइट, वो तो दुनिया नहीं घूमा है, ये उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो नहीं हो सकती। उसने ना तो एक्सपेरिमेंट किया लाइफ के साथ। होता है, मैं ये भी नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि भगवान होता है या नहीं होता है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, जिसकी जो श्रद्धा है। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट और लर्निंग के बाद ये बात समझनी चाहिए। अब उसको स्कूल में टीचरों ने सिखा दी ये बात, अब वो उस तरह के दोस्त मिलते जाएंगे, फिर वो कॉलेज में जाएगा। कॉलेज जो है वो आजकल एक फैशन ऐसा, दिस इज ऑल डूइंग ऑफ अमेरिका, लेट मी टेल यू, ये पूरा अमेरिका की डूइंग है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड के फेथ्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सो दैट मटीरियलिज्म बिकम्स द रियल फेथ ऑफ द वर्ल्ड। ये कितनी सिंपल सी पॉलिटिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो लोकल फेथ हैं, जो नेटिव फेथ्स हैं, राइट, फेथ का मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं, जो कल्चर है, रिचुअल्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, उसको तोड़ दिया जाए। अब ये साड़ी पहनी है, अमेरिका का ध्यान, अमेरिका मतलब कैपिटलिज्म का ध्यान ये, अच्छा ये साड़ी पहनती हैं, कैसे मैं इनको जीन्स की तरफ ले जाऊं। तो जीन्स की तरफ ले जाने के लिए ऐसा नहीं कि जीन्स में कोई गलत बात है, लेकिन उस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको वो सारी हजारों साल की मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा। वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉइंग इंडिया बाय कटिंग इट इनटू 1000 पीसेस, वो जो एक पाकिस्तान की थ्योरी थी, वही एग्जैक्टली है। तो ये जो बच्चे जितने हैं, ये जो बड़े हो रहे हैं, ये टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखते हैं। इनको ऐसा लगता है, इनको स्कूल में ये बताते हैं कि किसी को बहुत ऑप्रेस किया इसलिए वो टेररिस्ट बन गया, जो एक झूठ है। तो जितने बहुत लोगों ने फिल्में बनाई, उन सब लोगों ने टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया बिना किसी रिसर्च के। हम तो देखिए 600-700 कश्मीरी पंडितों से मिले, और हम तो 4 साल से यही डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ अभी बैठे हैं। तो मेरी लर्निंग खत्म नहीं हुई है। कोई ये सोचता है फिल्म हो गई तो अब हम बैठ गए, नहीं, मैं तो अभी भी बात कर रहा हूँ। थाईलैंड में लोग क्या सोचते हैं कश्मीर के बारे में, आई एम गेटिंग टू नो। इनमें से किसी ने भी किसी टेररिस्ट से बात नहीं करी, राइट। उनके घर जाके तो नहीं रहे टेररिस्ट लोगों क्या, ये थोड़ी हफीज सईद क्या रहे थे जाके, पर उसको जस्टिफाई कर दिया बिना उनसे मिले, राइट। तो इसलिए जितनी फिल्में बनी वो एक एंटी इंडिया फिल्में थी सारी की सारी। लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ, मैं रह चुका हूँ उसमें, इसलिए मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वेयर आई एम। दैट्स व्हाई वी मेड दिस फिल्म। आई थिंक द होल प्रॉब्लम इज 13 to 21 education system. Yes, and I think you've written in your book Urban Naxal, which I think viewers should read it. It's a wonderful book where you have written that there is an India outside Bharat, which is a very profound statement he made. This is what, as parents, we are always, you know, as a lecturer, as parents, this is what we experience on daily basis. Okay, now next question is what he's already asked you, and you have passed the buck to her. But I will ask you, you have to, I'm quoting you. I will not pass the buck. Buck belongs to her. The buck belongs to her. You have mentioned in one of your interviews, which I found was a very brave thing to say, that, and very assertively you said that cinema is a medium of expression of a director and a writer, right? So you have literally stripped the stars of their so-called power. So every actor that you've selected has been your medium, and that you have added value to them, they have added value to the role, because your conviction to say that has been so strong, and you believed it's your medium of expression. So while she selected them, I'm sure you had a very strong say in it. देखिए क्या है कि ये कन्विक्शन की बात ही नहीं, तो ट्रूथ है, तो सच्ची बात है। Yes. ये चाय है, ये पानी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, तो कोई भी बता सकता है। तो
आप क्या कर रहे हैं, देखिए फिल्म कहाँ से शुरू होती है, फिल्म शुरू होती है एक आदमी को लगता है ये स्टोरी बतानी चाहिए और वो एक यूनिवर्स क्रिएट करता है, उसमें कई कैरेक्टर्स क्रिएट करता है और वो कैरेक्टर्स क्या है, वो कैरेक्टर्स एक व्हीकल है एक मैसेजिंग का, चाहे स्लैपस्टिक क्यों ना हो। चार्ली चैपलिन की भी फिल्में जो हैं वो चार्ली चैपलिन की जगह अगर कोई और भी गिरेगा अच्छा एक्टर तो भी वही ड्रामा क्रिएट होने वाला है। लेकिन अगर आप ये मान लें कि इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, तो ये जो एक हमने इंडिया में माइथोलॉजिकल स्टारडम क्रिएट किया है, अपने हीरोज को हमने राम और कृष्ण जैसा बना दिया है कि रामायण हम 100 बार सुने तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये अभी हुआ है, ये पहले नहीं था। देखिए राम से ऊपर वाल्मीकि को रखा गया है भारतीय सभ्यता में, हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि राम से वाल्मीकि सबऑर्डिनेट बन जाए, ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लेकिन हमने धीरे धीरे बिकॉज हमारे यहाँ फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना आया, और फॉरेन इन्फ्लुएंस जब आया तो दे कुडंट बिलीव इट, तो उन लोगों ने इन लोगों को स्टारडम दिया। लेकिन एक्टर जब तक कैरेक्टर ना बन जाए वो एक्टर है ही नहीं। तो जो स्टार या एक्टर है उसको कैरेक्टर बनना चाहिए। मतलब अगर समझिए अब जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन है, ओके ही लुक्स लाइक अ ग्रीक गॉड, पर ही इज एन एक्टर बिकॉज वो एक कमजोर आदमी का भी रोल कर लेता है, एक बहुत कम, तो उस फिल्म में तो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जिसमें बंदूक लेके वो ऋतिक रोशन ही बना हुआ है, वो फिल्म फिर स्टार का मीडियम बन जाती है। और धीरे धीरे जो राइटर डायरेक्टर हैं दे बिकम सबऑर्डिनेट टू द स्टार, जबकि करेक्ट वे ऑफ फिल्म मेकिंग इज दैट एवरी एक्टर शुड बी सबऑर्डिनेट टू द राइटर एंड डायरेक्टर। अब बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा द डायरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू द राइटर, राइट, एंड एवरीबडी एल्स इज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर। सबसे ऊपर राइटर, फिर डायरेक्टर, उसके बाद कोई और। That's how I look at it. Brilliant. Now, there is one more thing that I felt when I watched the movie, okay, and everybody who watched the movie, it has changed the whole narrative, let's face it. So from exodus to genocide, you know, this was something we always spoke of, Kashmir exodus. It was never written Kashmir genocide. Today, even we talk so easily about Kashmir genocide. So when did you realize in your filmmaking, in your research, both of you, that this is not an exodus? You have a character there of Mithun, you know, whom you just start loving the minute you see, because you see the pain in him. He's the one who's also collecting information in the file, and he keeps on getting irritated. Look, this is not an exodus, this is an genocide. तो आप लोगों को ये कब एहसास हुआ कि ये, क्योंकि कहीं ये बात ऐसे कहीं नहीं गई है, कोई इस पे डिबेट भी नहीं था। So when did you decide that ये exodus नहीं है, genocide है? देखिए एक फिल्म अगर आपने देखी तो उसमें पल्लवी का जो कैरेक्टर है उनका डायलॉग है, देखिए बड़ी स्मार्ट फिल्म है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया कई चीजें, ये बहुत स्मार्ट फिल्म है। ये अभी तो हाइप में लोग देख रहे हैं तो वो एक नज़र से देख रहे हैं, पर मैं आपको गारंटी करता हूँ कुछ वक्त बाद देखेंगे तो इतनी नुआंस्ड फिल्म है ये जो आप बात कर रही हैं, ये पूरी फिलॉसफी एक्चुअली पल्लवी का कैरेक्टर बोलता है, राइट। इसमें मैंने जो मुझे बोलना चाहिए वो मेरा ऑपोजिशन वाला बोल रहा है, तो ये मैंने इसे क्रिस क्रॉस किया है। पल्लवी कहती है कि जुल्म की भी एक हायरार्की होती है, राइट। तो इस दुनिया का मॉडर्न जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें क्या हुआ है कि पिछले 20-25 साल से जितनी लॉबिंग अमेरिका और वेस्ट में हो रही है वो बेसिकली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज करती हैं, और इट सूट्स देम दैट इट इज नॉट कॉल्ड जेनोसाइड। तो इसलिए इसको एक एक्सोडस का वर्ड दिया। और जितने कश्मीरी हिंदू लोग भी निकले वो बड़े शरीफ सीधे साधे लोग थे, वो भाग रहे थे, दे वर नॉट, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि डेफिनेशंस को सॉर्ट आउट करें। आम आदमी जो है वो नहीं जानता है इस बात को कि ये पूरा का पूरा गेम लेबलिंग का है, आप हाउ यू लेबल समथिंग। तो आपने ज्यूज के साथ जो हुआ उसको तो होलोकॉस्ट करके एकदम अलग कर दिया, आपने कहा ये तो प्रीमियम ट्रेजेडी है। आई एम सॉरी टू स्पीक लाइक दैट, पर यही ट्रूथ है। आपने कहा ये, और उनके साथ जो हुआ भगवान ना करे दुनिया में किसी के, आपने कहा ये प्रीमियम ट्रेजेडी है। उसके बाद आपने कहा रुवांडा में हुआ, चलो अफ्रीकन्स को हमने बहुत सताया, इसको अब जेनोसाइड बोल देते हैं। आर्मेनिया में बहुत हुआ है तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनको बोल देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जो
पावरफुल सोसाइटीज के साथ जो हुआ है, बुद्धिस्ट के साथ कम हुआ है क्या? मैं थाईलैंड में बैठा हूँ इसलिए मुझे याद आ रहा है, बुद्धिस्ट के साथ भी बहुत हुआ है, ये जो इस्लाम वर्सेस बुद्धिज्म का है। पर दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं, क्या क्या हुआ है। नोबडी नोज अबाउट दिस। तो जो कश्मीर का जो पूरा जेनोसाइड था उसको एक्सोडस बोल दिया, फोर्स्ड एक्सोडस भी नहीं बोला, ऐसे बोल दिया जैसे कि भाई अकाल पड़ गया तो कई सारे लोग जमीन छोड़ के चले गए वहां से, यहाँ पे बाढ़ आ गई तो लोग उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले गए, इस तरह से एक्सोडस बोल दिया। नोबडी टुक इट सीरियसली एंड आई रियलाइज कि अगर दुनिया में यू हैव टू मेक योर पॉइंट then you have to fight with their own definitions and that's why I said genocide। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, कल रात को हम लोग जब एयरपोर्ट आ रहे थे तो मुझे किसी ने भेजा, एक क्रिश्चियन मिशनरी है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, ही इज लाइक टॉप वॉइस ऑफ द वर्ल्ड, वो क्रिश्चियंस के बारे में बहुत बात करता है। उसने ये फिल्म देखी क्योंकि लोगों ने उसको बोला कि देखो, उसने एक लाइन में बोला है, उसने बोला है वॉट एवर पीपल से दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, फॉर मी दिस फिल्म इज अबाउट whether it was an exodus or genocide, or actually this film is about that। Yes, it was from Exodus. That's why we have shown to people कि देखो, अपनी आंखों से देखो, realize करो ये exodus है कि genocide है। And this I'll ask Mr. Bakshi as well. As a Kashmiri Pandit, I'm sure how overwhelmed you felt watching the movie, especially when the last speech takes place. It was so beautiful. But when you hear people telling, it's very saddening when they say, why are they talking about something that happened 32 years ago? Why create this divide? Do you feel pained about it? Do you feel saddened about it? I am speechless on this particular movie which has been made. Because we are still at the pain. Our emotions are attached to this movie. Any Kashmiri Pandit anywhere around the world today feels as if he has won the world. Because 32 years, no one could even hear us out. Which Vivek ji has deliberately and regularly talked about in his lectures. That nobody listened to them. This is the first time someone could listen through a research-based interviews, which was facilitated by Global Kashmiri Pandit Diaspora, 700 interviews around the world. And even at that point of time, probably they would have still not thought that this would really happen. It was just a thought. But today we believe as Kashmiri Pandits, any part of the world, the thoughts have really become things with that Kheer Bhavani in Kashmir, our main temple, who has actually supported us. So we are the winners today. We feel at least now, instead of last 32 years, nobody heard us. Now people are watching through a Kashmir Files movie, which is not real, which is a real. And I repeat, which is a real. Because when you see the shots played in the movie, they're actually real. People are saying they're look at those family members who have gone through it and what they must be going through. I am becoming emotional that my family is not there, but look at those. So for us around the world, we are on the top of the world and we are grateful and thankful to Almighty first. And to Vivek ji and Pallavi ji, today we feel they are part of our family as Kashmiri Pandit family. And I want to tell you, Dr. Manisha Bose, when they went to Jammu, I mean, wherever they go, how Kashmiri Pandits treat them, they treat them like a god. Because nobody heard us. And when they went to Jammu, which is our main place, they were really treated like as if now you are a Kashmiri Pandit from today. At one of our function, I could not attend that. So, what else could happen to a person at 61-year-old? In my own life, I could see this story being told to the entire world. We are overwhelmed. We are grateful. We are thankful. एक भगा देना और एक भाग जाना दोनों में बहुत फर्क है. Exodus to genocide. This genocide word is hammered now completely in the movie. And I think you got a certification from, I saw in one of the news
certificate. Yeah, Somebody's we were. acknowledged it Yeah, as a lots of- genocide. Lots of एक states सवाल है actually, बख्शी जी आपसे जो कि अभी आपने बताया भी, कई लोगों का इंडिया में जो सुनने में आ रहा है, कई बहुत कम है, वो बहुत कम संख्या है जो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, कई कई चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सही नहीं है। आप तो कश्मीरी पंडित हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी। खैर सर, इन लोगों ने जितना रिसर्च किया है उस पर कोई सवाल ही नहीं है, उन्होंने जितनी मेहनत की है, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की पीछे, आप लोगों के पीछे, तो पता चला कितना इन लोगों ने मेहनत किया हुआ है। पर आप एज ए कश्मीरी पंडित क्या कहते हैं, कहीं भी फिल्म में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं है? एक एक शॉट 100% सही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ग्रेट रेस्पेक्ट टू डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, this is still only the 5 or 10% of what has happened. I was requesting them, you can make another 20 movies on this, because there are so many stories. There is a story of my family, there is a story of every Kashmiri family. I go back to 1947, when my grandfather was killed by Kabalis, 22 bullets in his chest, and my father was watching from the top of the tower. This is my story. Oh. Now see other stories. So I am having a pain in Bakshi family since 1947. This is not yesterday. And even if you remember, when Sushma ji came here, we talked about 370 that time. And this is a fact of life that we are still under pain, because finally we need to go back. This particular movie has opened the doors for Kashmiri Pandits to think back and go back to really my hometown. I heard that they started to talk about Kashmir now in the Lok Sabha or Vidhan Yeah, Sabha. but there was a bill. We got a bill already presented in the first time in 32 years in the parliament. Again, Global Kashmiri Pandit Diaspora has played a very active role. You see, GKPD is in multiple countries. Dr. Surendra Kaur is our chief volunteer. We are all volunteers. We are not presidents or vice presidents. In case you remember, when Dr. Sitaraman came here as a commerce minister and she was discussing commerce, and I raised the point about Kashmiri Pandit, and one of the audience said, oh, we need not to discuss Kashmiri Pandits here. But Dr. Sitaraman said, no, I want to listen to T.K. Bakshi and I want to respond to his question on Kashmir. This is a national issue. And now, this is a global issue where people talk about the genocide. So, अच्छा, मुझे जैसे आप लोगों ने रिसर्च किया है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा। मैंने ये पढ़ा था कि रेप वाज यूज्ड एज अ वॉर वेपन हियर, पर आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, और यू जस्ट evaded that part. Or was it true that rape was used as a war weapon in your research? Yes, I mean, of course, that is a strategy everywhere, right? I mean, it's not just Kashmir. That's true everywhere. Where you find women, that's the first thing that the terrorists would do. The reason why we didn't show the gang rape, which was, the character was based on this lady who was gang raped. And the reason we didn't show that was because no matter how nicely you do it, how aesthetically you do it, it still ends up looking like a titillating scene. And we really didn't want to create that. Hence, the stripping of Sharda was very metaphorical, where you see her back. And her name is Sharda, so Sharda is stripped. So that conveys it all. So we didn't have to actually go into the showing of the gang rape. Once she's stripped, she's then taken to the saw machine where she's cut into 2 pieces. So I thought that and as Mr. Bakshi said, 5% या 10% दिखाया है जो इन लोगों ने अनुभव किया है. So you also और क्रिएटिवली स्पीकिंग, अगर मेरा ऐसा मानना है एज अ डायरेक्टर, अगर कोई चीज बांसुरी से कही जा सके तो उसके लिए ऑर्केस्ट्रा क्यों बुलाने की जरूरत है? लोग समझ गए क्या बोलना था. इसको समराइज कर दिया, जो भी था उसका एक मेन जो एसेंस था वो इन्होंने दिखा दिया. तो आई थिंक इट्स एनफ टू पीपल टू see, like in Bandit Queen, if you remember, Shekhar Kapoor had shot this entire gang rape sequence, and it was brilliantly done. But the film was about that. Film was about Phulan Devi and what she suffered. This film was about multiple Kashmiri Pandits. Hence, we did not just decide to get into one character. Vivek ji, you have portrayed Anupam ji's character, the pain, what he's
missing the snow, the calling. You portrayed it beautifully, and the narrative that people have been poisoned by has been so beautifully portrayed as a narrative which she stands for. So overall, a big congratulations for this Thank you. movie, and we Thank are you. so honored to have you all here. And I think we are running short of time, Yeah. so we will. अनुपम खेर जी का तुम क्या जानते हो कश्मीर के बारे में, तुम एंड टिपिकल कश्मीरी वॉइस, that is so powerful. The accent also, he used that Kashmiri And accent. it's very tough for him. You know, Yeah. he is brought up in Shimla and then in Mumbai. तुम क्या जानते हो कश्मीर के बारे में, तुम्हें क्या पता कश्मीर क्या है? That has touched the hearts of entire Kashmiri community around the world. And I salute Anupam ji for that.